From the CBSE syllabus, my sound is clear now. Just one time. Okay. Okay. So from the CBSE syllabus, chapter number 1, food and its sources, we have completed. In that, we have seen that we obtain the food from two sources, that is plant source and animal source. We obtain the food from the roots, food from the stem, food from the flower, then leaves, then fruit, then seeds. Okay, from these plant parts we obtain the food. We also obtain the food from animals: milk, egg, meat, fish, honey. Then depending on food habitat, okay, depending on food habitat, animals are classified as herbivore, carnivore, omnivore, scavenger, host, parasite, decomposers. And next one, that is food chain. Okay, next one, that is food chain and food web. Okay, so this topic is present in chapter number 1. Okay, and chapter number 1 I have already completed. I am giving you 2 dates again for study. Wednesday I will send the test on chapter number 1. ओके आपको संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ाई के लिए मिलता है. वेडनेसडे आई अपलोड द टेस्ट ओके ऑन द ऐप. 10 क्लासेस ऐप है, आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको सब इंफॉर्मेशन ग्रुप पे डाल दूंगी. ओके, सो ऐप में मैं टेस्ट डालने वाली हूँ. यू हैव टू सॉल्व द टेस्ट एट योर होम. यू कैन गिव द टेस्ट मेनी टाइम्स. ओके, टेस्ट ऐप में है, आप मेनी टाइम्स दे सकते हैं. सो नेक्स्ट दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, आपका बोर्ड कौन सा भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो. ओके, सो मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम आपका कौन सा भी बोर्ड हो, मैक्सिमम बच्चों के बुक में ये चैप्टर प्रेजेंट है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इवन इन द स्टेट बोर्ड आल्सो सेम चैप्टर इज गिवन. ओके, आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बोर्ड डजंट मैटर. बोर्ड को साइड में रख देते हैं. हमें क्या सीखना है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, बोर्ड कौन सा भी हो, हमें न्यू टॉपिक सीखना है कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Okay, you should know the definition of nutrients. The chemical substance which are present in the food, and that chemical substance, that one is called nutrient. Okay, food contain the different nutrient. Nutrient is essential for the growth of our body and development of our body. In the food there is a nutrient present, and nutrient is important for the growth of our body and development of our body. So there are 5 major nutrients in our food: carbohydrates, protein, fat, vitamin, minerals. Along with this, water and roughage. Yes, okay, along with this, water and roughage is also present. Yesterday, I have started first component, but today I take the revision. Okay, उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट वन yesterday I have already taught you. The component is carbohydrates. Okay, component is carbohydrates. Okay, so carbohydrate is called energy giving food. Carbohydrate is also called staple food. Okay, carbohydrate is energy giving food, carbohydrate is staple food, carbohydrate gives us the energy.
Now this carbohydrate, how many type of carbohydrate? There are two types of carbohydrates. First type, that is simple carbohydrate. Okay, first type, that is the simple carbohydrates. Board is visible to you, my dear students? Board is visible. Okay, next one, second type, yes, complex carbohydrate. Very good, my dear students. Okay, complex carbohydrates. Okay, carbohydrate gives us the energy. They are called energy giving food. Now, first one, simple carbohydrate. It is also called sugar. उसको another name क्या है? That is the sugar. This simple carbohydrate is easily absorbed in our blood. In our blood. Okay, simple carbohydrate is easily absorbed in the blood and it gives the energy immediately, very fastly. Okay, yes, very fastly, instantly. They are called sugar. That's why to the patients, okay, those patients which are not able to eat the solid substance, जो भाकरी चपाती खिचड़ी खा नहीं सकता है, okay, those patients which are not able to solid substance, to that patient injection saline, okay, via saline the glucose is given, injected, glucose is injected, glucose is given. Yes, yes beta, okay, glucose is given because glucose gives energy instantly. Now summer season चलो है, आप बाहर से खेल के आए, अपने ग्लास में वाटर लिया, टैंक डाला, नहीं तो ग्लूकोन डी की पाउडर ऐड कर ली, ओके, आपने पी लिया, आपको क्या हो जाएगा? इंस्टेंट एनर्जी मिल, पीते हैं ना आप ग्लूकोन डी, ओके, खेल के आते हैं तो टैंक पीते हैं, ग्लूकोन डी, शरबत, जो भी कुछ है, ओके, सो इन शॉर्ट ग्लूकोज, okay, glucon D, it is the simple carbohydrate. Simple carbohydrate is also called sugar. Okay, it gives the energy very fastly, instantly. Hello. हो करा join. Yes. Okay, yes, Palak, I'm giving the answer. Okay, so first one, simple carbohydrate, that is the sugar. Okay, it is easily absorbed in the blood and give the energy immediately. That's why to the patient glucose is given. Hello, आहे join करा meeting. Same link है. Yes. Okay, so that's why glucose is given to the patients. So this simple sugar is present in the fruits, table sugar. हम जो घर में शुगर यूज करते हैं, that is called table sugar, fruits, honey. In that simple sugar is present. उसमें भी टाइप है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, बट आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो द एग्जांपल्स. Yesterday I have told you the example of simple sugar like glucose, fructose, galactose, then lactose, then maltose and sucrose. Okay, so in that, that is the simple sugar is present. So which are the example? First one, glucose, मैंने बोला ना glucon D. ओके, देन फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रुक्टोज प्रेजेंट है. देन टेबल शुगर में क्या प्रेजेंट है? सुक्रोज प्रेजेंट है. मिल्क में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है. देन गैलेक्टोज. So are the example of simple sugar. Even maltose,
Okay, those are the example of simple sugar. Okay, ये सभी किसके examples है? That is the simple sugar. Okay, understand simple sugar के example glucose. Okay, then fructose, हम जो fruits खाते हैं fruits में है sucrose, टेबल शुगर में है, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट है, फ्रूट में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, गैलेक्टोज and next one maltose. These are the example of simple yes, simple carbohydrate, or it is also called sugar. Okay, it is also called sugar. Next one is complex carbohydrate. First of all, you should know how complex carbohydrate is formed. Complex carbohydrate is formed from the simple carbohydrate. For example, this is the glucose. ये क्या है? Glucose. And glucose क्या है? Simple carbohydrate. So when many simple carbohydrate combined together, it form the long chain of complex carbohydrate. Okay, suppose यहाँ पे glucose है, देखो यहाँ पे मैंने glucose लिखा है. This is the structure of glucose. Okay, glucose क्या है? Simple carbohydrate. Okay, it is the example. Iron, those are the example of simple carbohydrate. ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है. दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ओके, गैलेक्टोज, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. जस्ट 1 minute. Okay, next one, complex carbohydrate. But how complex carbohydrate is formed? When many simple, suppose this one is simple carbohydrate, when many simple carbohydrate combine together, it forms the long chain, and that one is called complex carbohydrate. Okay, so this complex carbohydrate, okay, yes, sugars में mainly sugar में present होते हैं. Okay, this complex carbohydrate, it gives the energy but very slowly. Okay, this complex carbohydrate, it gives the energy but very slowly. Why? Because they do not easily mix in the blood. They are not easily absorbed in the blood. Okay, so this complex carbohydrate is first broken down into simple carbohydrate, and then we obtain the energy. Okay, so this gives the energy but at a very slow rate. Okay, it gives the energy but very slowly. Okay, so in this complex carbohydrate, example is starch. इसका एग्जाम्पल क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का? स्टार्च. देन नेक्स्ट वन सेल्यूलोज. ओके, yes, starch, then cellulose, fiber, and next one glycogen. Okay, fibers भी and next one, that is glycogen. Those are the example of complex carbohydrate. Okay, those are the example of complex carbohydrate. Okay, so in the complex carbohydrate, in our food item, in the starch, there are carbohydrate, there are simple carbohydrate is also present. देखो आपने fruits खाए, आपको क्या मिलेगा? Fructose. Fructose means simple carbohydrate. आपने milk पिया, milk में क्या present है? Lactose. Lactose means simple carbohydrate. So हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये नेम है बेटा. ओके, दीज आर द नेम्स डियर स्टूडेंट्स. ओके, ये क्या है? एग्जांपल्स है. जैसे हम नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स बताते हैं.
ओके वैसे ये क्या है एग्जाम्पल से ओके फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सेल्यूलोज फाइबर ग्लाइकोजन दस आर द एग्जाम्पल्स So those are the starch, cellulose, fiber, glycogen. Those are the example of complex carbohydrate. Complex carbohydrate are not easily absorbed in the blood. They give the energy slowly. Why they give the energy slowly? Because this complex carbohydrate is first broken down into simple carbohydrate and then energy is obtained. ओके अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई इट गिव्स द एनर्जी स्लोली अभी किसी ने तो मुझे पूछा कि ग्लाइकोजन क्या है इट्स अ एग्जांपल ओके जैसे प्लांट फाइबर होते हैं एनिमल फाइबर वैसे इसके ये क्या है स्टार्च सेल्यूलोज फाइबर्स ग्लाइकोजन दस आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. So in our food item, there the starch is present. So which are the sources of starch? Wheat, rice, maize, potato. Okay, those are present in the food atom. Food atom में present होते हैं. Simple carbohydrate भी and complex carbohydrate भी. And starch कौन से food item खाने से हमें starch मिलेंगे? Wheat, rice, maize, potato, bread, cereals, pasta. Okay, wheat से जो भी चीजें बनती है, rice से जो भी चीजें बनती है, पोटैटो से जो भी चीजें बनती है मेज जवार बाजरा कॉर्न ओके ये सब में क्या प्रेजेंट है स्टार्च ओके अंडरस्टैंड so this starch is example of complex carbohydrate and how starch is formed when many glucose okay when many glucose molecule are joined together it make the starch it make एक ग्लूकोज है सिर्फ एक है ग्लूकोज तो वो क्या हो जाएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट बट ऐसे मेनी ग्लूकोज की चेन बन गई तो क्या बनती है स्टार्च सिर्फ एक है ग्लूकोज तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड मेनी ग्लूकोज की लॉन्ग चेन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं स्टार्च ओके अंडरस्टैंड सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सो in the carbohydrate carbon is present hydrogen is present oxygen is present okay cellulose is also complex carbohydrate जो सब grass होता है grass eating animal yes na do you know the example ruminants grass eating animal is called ruminants okay grass eating animal is called ruminants Okay, so cellulose, example of complex carbohydrate, starch, complex carbohydrate, fiber, complex carbohydrate, glycogen, complex carbohydrate. Okay, so carbohydrate क्या है? Organic substance है एंड उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी आप बोलेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है दस आर द एलिमेंट्स जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी अल्फाबेट्स होते हैं यस ना हाउ मेनी अल्फाबेट्स 26 ओके 26 अल्फाबेट वैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एलिमेंट्स होते देर आर 118 एलिमेंट्स यस केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दस आर द एलिमेंट्स ये क्या है एलिमेंट्स ओके केमिस्ट्री देखो अभी हम जब होमी बाबा सीखने वाले हैं तो उसमें केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर होते हैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर होते हैं बायोलॉजी के कुछ चैप्टर होते हैं नाउ दिस चैप्टर नंबर 1 and 2 दे आर इन द बायोलॉजी एंड नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक वो किस में आता है केमिस्ट्री में आता है ओके मोशन चैप्टर किस में आएगा फिजिक्स में ओके ऐसे देयर आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस दैट इज फिजिक्स
chemistry, biology. Okay, so this is the chapter of biology. So coming to our topic, we have started to see the information of first nutrient, that is the carbohydrate. First nutrient कौन सा है? That is the carbohydrate. So carbohydrate is the organic substance. उसमें 3 elements present है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2:1 रेशियो. ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1, मींस 2 हाइड्रोजन and 1 oxygen, 2:1. Now when I eat the excess of carbohydrate, ओके, मैंने कार्बोहाइड्रेट के फूड आइटम ज्यादा खाए, सपोज चपाती है, राइस है, भाकरी है, ब्रेड है, डेली में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ, देन क्या होता है? दिस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दे आर स्टोर्ड अंडर द बॉडी. फैट हमारे बॉडी में क्या होता है? स्टोर्ड होता है. इज इट ओके? Is it okay, my dear student, about the first nutrient, that is carbohydrate? Okay. Now coming to the second nutrient, that is the fats. Okay. Now next one, next nutrient, that is the fats. Okay. So in our food item, in our diet, there are 5 major nutrients are present. So next nutrient, that is the fats. Fats is also called energy giving food. Okay, fats को भी क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. इसके पहले मैंने किसको बताया था एनर्जी गिविंग फूड? कार्बोहाइड्रेट. अब भी मैंने रब किया ना कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. So like these fats is also called energy giving food. Okay, fats को भी क्या बोलते हैं? Energy giving food. But there is a difference. Carbohydrate and fats, there is a difference. क्या difference है? Fat gives double amount of energy than the carbohydrate. Okay, और fat gives the twice. कोई कोई बुक में twice लिखा है, कोई कोई बुक में double लिखा है. No problem. Fat gives twice amount of energy than carbohydrate. ओके, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमें कौन देता है? फैट्स. यस, फैट गिव्स द ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी और फैट गिव्स द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. किसके साथ कंपेयर करना है? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो फैट गिव्स द ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी, double amount of energy than the carbohydrates. Okay, so fat gives energy, yes, no problem, but our body need the fat in minimum amount. Okay, minimum amount में भी हमें fat minimum amount. Okay, we need the fat in very amount. मिस मैंने शॉर्टकट लिखा है empty. Okay, so fat gives, fat need, our body need the fat in minimum amount. Okay, so minimum amount of fat. Yes, okay, yes, when we eat the more fatty substance we have the obesity, yes, heart problem, yes, no problem, correct. So minimum amount of fat is needed for our growth and development of our body. Yes, fat gives the energy. Carbohydrate, fats, both are called energy giving food. Fat gives twice amount of energy than carbohydrate, and minimum amount of fat gives the energy which is required for the growth and development of the body. Fat is also required for the proper functioning of brain and nervous system. Okay, again, why we need the fat?
for the proper functioning of brain and nervous system. ओके सो हमारा ब्रेन को जो वर्क करना है, नर्वस सिस्टम को जो वर्क करना है, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड द फैट्स. ओके व्हाट अबाउट अदर्स? माय साउंड इज ओके? Anyone type the message that your sound is not coming? My sound is clear? Okay. Sanskruti, my sound is clear? Okay. So how many type of fats? There are two type of fats, that is saturated fat and unsaturated fats. Okay. So ये जो fats है, fats का classification fats के दो ग्रुप होते हैं. ओके उसके टू ग्रुप होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट. यस सैचुरेटेड फैट एंड नेक्स्ट वन दैट इज अनसैचुरेटेड फैट. ओके सैचुरेटेड फैट एंड नेक्स्ट वन दैट इज अनसैचुरेटेड फैट. फैट के टू टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. Now those fat which are solid at room temperature, जो room temperature को solid होते हैं, they are called saturated fat. And those fat which are liquid at room temperature, okay, which are liquid at room temperature. Yes, fat stored the energy. Yes, okay. So those which are solid at room temperature, that is called saturated fat. Example is butter and ghee. Okay, example is butter, ghee. Okay, cheese, no problem. Okay, so butter, ghee, cheese. Then next one, unsaturated fat. Those fat, okay, which are liquid at a room temperature. Example is all type of vegetable oil. जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, ओके फॉर एग्जाम्पल हम ग्राउंडनट का ऑयल यूज करते हैं, हम सनफ्लावर का यूज करते हैं, हम सोयाबीन का यूज करते हैं, सीसम, तिल 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 तिल, ओके मस्टर्ड, हम जो भी. यस बेटा पाम ऑयल ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है. ओके नो प्रॉब्लम. ओके सो अनसैचुरेटेड, okay unsaturated fat. Arjun, yes correct beta. So unsaturated fat, those fat which is liquid at room temperature, that is called unsaturated fat. Example is all type of oil. I have given some example, that is groundnut oil, sunflower oil, soybean oil, sesame oil, mustard oil. Okay so in short we say that those fat which is obtained from animals, जो हमें एनिमल से मिलता है उसको भी हम सैचुरेटेड बोल सकते हैं ना. यस ओके दोस फैट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स उसको भी हम सैचुरेटेड बोल सकते हैं. एंड दोस फैट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स उसको हम कौन सा बोल सकते हैं? अनसैचुरेटेड. ओके जो प्लांट से मिलते हैं दैट इज द अनसैचुरेटेड. नाउ सोर्सेस ऑफ फैट, क्या खाने से हमें फैट्स मिलते हैं? अगेन फैट के टू सोर्सेस है, दैट इज वी ऑब्टेन द फैट फ्रॉम द प्लांट्स आल्सो एंड वी ऑब्टेन द फैट फ्रॉम द एनिमल्स आल्सो. ओके हमें फैट्स प्लांट से भी मिलते हैं, हमें फैट्स एनिमल से भी मिलते हैं. ओके सो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फैट, दैट इज द प्लांट एंड एनिमल्स. सो प्लांट वेजिटेबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, हम जो नट्स खाते हैं, ओके आलमंड, कैशू. यू हैव ऑलरेडी मेक द लिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स. यस ना मैंने होमवर्क दिया था, लिस्ट बनाई है ड्राई फ्रूट्स की. फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स होमवर्क दिया था मैंने. सो नट्स, हम जो नट्स खाते हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट है? दैट इज द फैट्स, आलमंड, कैशू. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज animal source. Okay we obtain the fat from the animal source like the egg yolk, then milk product like ghee, butter, cheese, paneer जो भी है, and meat.
okay, are the some fat rich source we get from the animals. Okay, so animal source में कौन कौन से आते हैं? Egg yolk, then meat and milk product. Okay, egg yolk, milk and meat. Milk product and meat are the animal source of the fat. Now fat gives us the extra energy, double energy. तो हमने ज्यादा फैट्स खाने चाहिए क्या? No. Okay, because when we eat the more fatty substance, we have the two drawbacks. First one is obesity. Okay, ज़्यादा fatty substance खाए तो क्या होता है? Obesity. And second one, if we eat the more fatty substance, that fatty substance are deposited in our arteries. Okay, हमारे जो blood vessels होते हैं, okay, deposition of fat in the artery that make the problem, that is blood is not circulated properly and there is a pressure in our heart. Okay, fat deposition, yes, fat stored हो जाता है arteries में and blood is not easily passed and we have the chance of heart problem, heart attack. Okay, we have the problem of heart attack, okay, or heart problem. When fat is deposited in the blood vessel, fat is deposited in the artery. Okay, understand fat deposit हो गया? Okay, so when we eat the more fatty substance, we have the obesity and we have the heart problem. Now, this fat is stored under the skin. Okay, suppose हमारे body में fats है. Okay, so where that fat goes? Under the skin, around the heart, around the kidney, around the internal organs. Okay, so it act as a cushion. It protect our internal organs. Suppose heart है तो heart के side में क्या होता है? फैट का डिपोजिशन हो जाता है. किडनी है, किडनी के साइड में फैट, पूरे बॉडी में भी फैट डिपॉजिट होता है. So this fat protect our internal organs. फैट क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करता है. इट एक्ट एज अ कुशन. Okay, it act as a cushion which protect our internal organs. Is it okay, Shivansh, about the fat? Okay, yes, Adhiraj, is it okay? Sanskruti, Sanvi, जो भी मेरे सामने दिख रहा है, is it okay about the fats? Okay. Now, next nutrient. First nutrient we have discussed, that one is carbohydrate. Second nutrient right now I have discussed, that is the fats. Now third nutrient, that is the protein. Okay, so carbohydrate and fat is called protein. I am asking, you have not listened my question properly. Carbohydrate and fats are called which type of food? Yes, energy giving food. So like this, protein is called bodybuilding food. Okay, protein is called bodybuilding food. Yes. Okay, protein is called bodybuilding food. Okay. मोस्टली ऑयली आते हैं बेटा, उसमें अनसैचुरेटेड में मोस्टली ऑयल. प्लांट सोर्स बताया ना मैंने, नट्स. ओके, प्लांट सोर्स नट्स. ओके, सो नेक्स्ट दैट इज द protein. Okay, next nutrient, protein. Its nickname is body building food. Okay, so protein are the building block of cell in our body. So in our body, the smallest unit, that is called cell. Okay, in our body, okay, living thing, all living thing, the smallest unit, that is called cell. Then this group of cell, that is called tissue. Group of tissue, that is called organ. And
organ system is present in the organism. Okay, organ system is present in the organism. Yes. Yes, elements are okay. So, Sanvi have asked good question. Fats, fats में कौन से elements present होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, and ऑक्सीजन है. Okay, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. 10 एलिमेंट. You can type the message. मैं चेक करती हूँ. यस ना, मैं चेक करती हूँ. यू कैन टाइप द मैसेज. सो फैट्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन. यस. Okay, now next one, that is the protein. Protein is called building block of cell in our body. Protein is required for growth of our body. It is required for repair and replace worn out tissue. Okay, हमारे बॉडी में जो भी आप सपोज आपको फ्रैक्चर हो गया, आफ्टर एनी स्क्रैच हो गया, आफ्टर सम डेज योर स्किन बिकम नॉर्मल. Okay, fracture also normal because this protein makes us prepare. बेटा ये एलिमेंट्स फैट में प्रेजेंट होते हैं. ये एलिमेंट्स मिलके वो फैट बना है. ओके, फैट कैसे बना है? एलिमेंट से बना है. ओके, सो प्रोटीन is called body building food. Protein are the building block of cell in our body. Yes. Okay, it is required for first one, growth of our body, repair of our body, replace the worn out tissue. Okay, so for this protein is important. So in this protein there is a carbon present, hydrogen present, oxygen present, but in the protein along with these nitrogen is also present. प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ और एक स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन. नाउ प्रोटीन के भी बोथ सोर्स है. प्रोटीन हैविंग बोथ सोर्स, दैट इज द प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स. ओके, प्रोटीन के भी दोनों सोर्स है, दैट इज द प्लांट सोर्स and next one animal source. So in the plant source, soyabean, pulses, peas, groundnut, okay, all dals, pulses, okay, all, yes, yes, okay, all pulses. May I repeat again? Okay, Abhiraj, see here. Okay, we obtain the protein from both sources, that is plant source, next one animal source. Soyabean, pulses, peas, groundnut are the some example of plant protein. Okay, are the some example of plant protein. Then next one, animal sources, meat, egg, then fish, then milk and milk product. Okay, we obtain the protein from the meat, then egg, fish, milk and all milk product, dairy product, milk product. In that protein is present. Is it okay, my dear students, about the proteins? In what animal and plants are come? Okay. प्रोटीन्स के two sources है. We obtain the protein from the plants also and we obtain the protein from the animals also. That's why I have write down the two heading, that is plants and animals. Protein, we obtain the protein from plants also, we obtain the protein from the animals also. Okay, so this protein is very important as a building block of our body. हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर करना है, जो भी रिप्लेस करना है, फॉर दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम योर हेयर, नेल्स, हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी है,
बॉडी बिल्डिंग के लिए, दैट आर द प्रोटीन्स. ओके, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी लगता है दैट आर द प्रोटीन्स. इज इट ओके अबाउट द प्रोटीन? Yes, ma'am. Okay. Now, there are the three tests to identify the starch, protein, and fat. Okay. Okay, sugar की भी है. Yes. Okay. There are the four tests. Yes. Okay. So first one, that is test for starch. Starch किसका example है? Don't use the book. Close the book. Okay. Okay. Yes, beta. May I repeat? Okay. Plant sources में soybean, then pulses, then bean, then groundnuts. Okay. All are the plant proteins. Okay. I have asked you one question, that is starch क्या है? Someone have given the answer, that is carbohydrate. But कौन सा carbohydrate? Complex carbohydrate. Okay, starch क्या है? Yes, your answer is correct. It is the carbohydrate. But कौन से type का carbohydrate है? Complex carbohydrate. Now, test for sugar. ओके, टेस्ट फॉर शुगर. शुगर में कौन कौन से शुगर में मींस सिंपल, शुगर मींस सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ओके, आई हैव taught you the two type of carbohydrate, that is simple carbohydrate and next one complex carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज. ओके, सो ये क्या हो गए सब? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. And next one, complex carbohydrate. Okay, next one, that is complex carbohydrate. Okay, complex carbohydrate में है स्टार्च, सेलुलोज, फाइबर, ग्लाइकोजन. बट हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे. ओके, सपोज हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ओके, ब्रेड खाते हैं, देन ज्वार, बाजरा, ओके, सीरियल्स. सभी सीरियल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. ओके, एंड नेक्स्ट वन सिंपल शुगर. ओके, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की भी टेस्ट देखनी है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बहुत से है, बट उसमें से कौन से इसकी टेस्ट देखनी है हमें? स्टार्च. एंड यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में all type of sugar के combined taste है. Okay, so first one taste for starch. Okay, मैक्सिमम आपका सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बुक हो उसमें टेस्ट फॉर स्टार्च है. एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन माय प्रीवियस क्लास. यस ना, संस्कृति मैंने फूड आइटम में टेस्ट करके बताई थी. ओके, आपको भी मंडे को करके बताऊंगी. ओके, सब टेस्ट बता दूंगी. कार्बोहाइड्रेट, that is starch की, then sugar की, then protein and fat, सबके टेस्ट मंडे आई विल शो यू. ओके, सो टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक द फूड आइटम. हमें कोई भी फूड आइटम लेना है कि जिसमें स्टार्च है, नहीं तो नहीं है, नहीं रहता तो भी चलता है तो भी चलता है. ओके, टेक द फूड आइटम, then add some drop of water and then add the iodine solution. And when we add the iodine solution, if its color change to blue black, जब उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, then in that food atom starch is present. ओके, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. होमी बाबा के एग्जाम में ये टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, suppose I have add any chemical in the food atom and its color is changed into blue black, which one is that chemical? Iodine. Iodine. ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है होमी बाबा में. Okay, then if I would like to taste the starch, I add the iodine, and after adding the iodine, the food item change into which color? Blue black. Blue black.
Okay, so that one is test for the starch. आपको लर्न करना है टेस्ट फॉर द स्टार्च. मैंने बहुत इजीली शॉर्ट लैंग्वेज में लिख के दी है. टेक द फूड एटम, add some water, then add iodine solution. If we add the iodine solution, its color is changed into blue and black, and if its color is changed into blue black means in that food atom starch is present. Okay, understand taste for starch. Okay, now next one, taste for the sugar or simple carbohydrate. That taste is called Benedict taste. Okay, Benedict का एक solution होता है, उसका कलर होता है ब्लू, स्काई ब्लू. मैंने जो ड्रेस पहना है वैसे स्काई ब्लू कलर का बेनेडिक्ट का सॉल्यूशन होता है. ओके, लाइक दिस स्काई ब्लू कलर का बेनेडिक्ट कलर का सॉल्यूशन होता है. ओके, सो we have to take the food atom, add the Benedict solution, and we have to keep that solution or test tube in a warm water. Then that original color is blue. Benedict solution का original color कौन सा होता है? Blue. And we have to keep that test tube in the warm water. And after some time, its color change. Green हो सकता है, नहीं तो येलो हो सकता है, नहीं तो रेड भी होता है. ओके, उसके कलर चेंज होते. क्यों कलर चेंज होते? क्योंकि सिंपल शुगर में एक थोड़ी है. सिंपल शुगर में 6 एग्जांपल बताया मैंने आपके. सो उसके कलर चेंज होता है. दैट इज ग्रीन, येलो एंड ब्रिक रेड. सो ग्रीन मीन्स उसमें लो शुगर प्रेजेंट है, लो शुगर प्रेजेंट है. येलो मीन्स उसमें मीडियम शुगर प्रेजेंट है. एंड देन नेक्स्ट वन रेड. यस अर्जुन, तुमने संडे साइंस स्कूल में की है. ओके, एंड रेड मीन्स उसमें हाई शुगर प्रेजेंट है. देखो, सिंपल शुगर टेस्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर कैसे होता है? ब्लू. सपोज मैंने कोई फ्रूट का जूस लिया, ग्लूकोन डी लिया, शुगर केन का जूस लिया, उसमें मैंने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया एंड टेस्ट ट्यूब को वार्म वाटर में रख दिया. सो आफ्टर सम टाइम इट्स कलर चेंज. ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है. ग्रीन मीन्स उसमें लो शुगर प्रेजेंट है, येलो मीन्स उसमें मीडियम शुगर प्रेजेंट है, एंड ब्रिक रेड मीन्स उसमें हाई शुगर प्रेजेंट है. Okay, understand taste for sugar. Okay. Now next one, taste for protein. Okay, next one, that is taste for protein. Shreya Deshmukh, just 1 minute बेटा, homework पे देने वाली हूँ मैं. Taste for the protein. Okay, so कोई food item है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं? मैंने बोला इसमें प्रोटीन है. वाय यू बिलीव ऑन मी? का तुम्ही माझ्या विश्वास ठेवला पाहिजे? नो, यू हैव टू परफॉर्म इट. ओके, यस ना सानवी, कर किए थे हमने जूनियर लेवल में संडे साइंस स्कूल में. जो भी जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स है संडे साइंस स्कूल में ये सभी टेस्ट मैंने सिखाए. इवन जितेशा भी प्रेजेंट थी संडे साइंस स्कूल में. ओके, सो नेक्स्ट वन, दैट इज टेस्ट फॉर द प्रोटीन. सो हम जो फूड आइटम खाते हैं उसमें सच में प्रोटीन है क्या? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए टेस्टिंग. सो टेक द फूड आइटम, in that add the water, and then in that first one take the food atom. जो भी food atom हमें टेस्ट करना है. Okay, take the food atom, in that food atom add some water, 10 drop. Okay, or add some water. After that, in that food atom add the copper sulfate solution. उसमें आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर कौन सा होता है? ब्लू. कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? दैट इज द ब्लू. यू हैव टू एड द बोथ. संडे साइंस स्कूल ऑनलाइन भी है बेटा. एक्चुअली ये सानवी जो है पुणे से है. सानवी ने 2 ईयर बिफोर ना, लास्ट ईयर सानवी संडे साइंस स्कूल में प्रेजेंट थी. ऑनलाइन भी लेती हूँ संडे साइंस स्कूल, नो प्रॉब्लम. Okay, so take the food atom,
In that add the water, in that add the copper sulfate solution. Copper sulfate blue color का होता है. Okay, then after that to this you have to add the caustic soda. Okay, आपको क्या ऐड करना है? caustic soda. उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसका फॉर्मूला है NaOH. कॉपर सल्फेट का है CuSO4. दो केमिकल लगते हैं हमें प्रोटीन टेस्ट करने के लिए. कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है एंड कास्टिक सोडा उसका अनदर नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन वी टेक द फूड एटम, we add the water, we add the copper sulfate solution, we add the sodium hydroxide, then its color is changed into purple. उसका कलर कौन सा हो जाता है? That is the purple or violet. कोई कोई बुक में violet दिया है, violet भी चलता है and purple भी चलता है. So its color is changed into violet or purple. उसका कलर violet और purple होता है. जब उसका कलर violet और purple होता है, in that food atom protein is present. वायलेट पर्पल नहीं हुआ तो प्रोटीन इज absent. नहीं हुआ तो प्रोटीन इज absent. इजी. संडे साइंस स्कूल में सिखाइए ये टेस्ट. ओके, जो भी स्टूडेंट्स देखो उस टाइम हमने स्टार्च, बेनेडिक्ट टेस्ट, प्रोटीन, फैट, ऑयल एंड वाटर सभी एक्सपेरिमेंट हमने किए थे संडे साइंस स्कूल में. ओके, सो अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर प्रोटीन. ओके, सी प्रोटीन के लिए सिर्फ टू नेम आपको लर्न करना है. दैट इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. कॉपर सल्फेट से फक्त 2 ड्रॉप्स है, कास्टिक सोडा से 10 ड्रॉप्स. यस, copper sulfate we have to add the 2 drop and caustic this one we need the 2 drop and caustic soda 10 drops. Okay, so if its color is changed violet in that food atom, उसका कलर चेंज हो गया, वायलेट हो गया, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज टेस्ट फॉर फैट. वेरी इजी टेस्ट है. आज आप सबको फैट की टेस्ट करके देखनी है. प्रोटीन की नहीं बोलूंगी क्योंकि उसके लिए केमिकल्स लगते हैं. ओके, फैट की टेस्ट आप सब लोग घर जाके कर सकते हैं. टेक एनी व्हाइट पेपर, add some groundnut, crush it, remove that groundnut, you are able to see the oily patch and that oily patch is translucent. Okay, so this shows that in that food atom fat is present. आपको कोई भी ब्राउन कलर का नहीं तो व्हाइट कलर का पेज लेना है. इसमें आपको घी भी ऐड किया तो चलता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ घी ऐड, then rub it, remove it and see the oily patch. नहीं तो ग्राउंडनट लो, उसको अच्छे से टीयर करो, बट सॉरी डोंट टीयर द पेज, क्रश करना है. ओके, इजीली ऐसे क्रश करना है कि पेपर टीयर नहीं होनी चाहिए. एंड रिमूव दैट ग्राउंडनट, यू आर एबल टू सी द ऑयली पैच. आपको ऑयली पैच दिखेगा. ओके, so that oily patch means in that food atom fat is present. उसमें क्या present है? Fat present है. So today I have taught you the 4 tests. Okay, first one that is test for starch. Then next one simple sugar. Then next one protein. Then next one fats. So those are the tests. Okay, Monday I will show you all 4 tests with practically. Okay, yes beta. Color होते हैं येलो, ग्रीन, रेड. ओके, मंडे आई विल शो यू दिस ऑल एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली. सभी एक्सपेरिमेंट के नो संडे 1 minute. Sunday there will be no class. Every Sunday compulsory holiday. And today's homework is Shreya and all students learn all the tests. सभी टेस्ट लर्न करना है. नोट डाउन नहीं किया तो चलता है बट लर्न करना है. एंड अगेन नेक्स्ट होमवर्क दैट इज आपको सबके
सोर्सेस लिखना है, स्टार्च के सोर्सेस, देन फैट के प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, प्रोटीन के प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, शॉर्ट में लिखना है, नहीं तो बुक में अंडरलाइन कर लो, बट लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ तक आपको सब रीड करके रखना है, लर्न करना है, इवन ऑल टेस्ट यू हैव टू लर्न। ओके, मंडे में रिपीट करूंगी, फिर से रिपीट करूंगी लगे तो। ओके, सपोज आज आपको समझ में नहीं आए होंगे तो मंडे आई विल रिपीट अगेन। स्टार्च, प्रोटीन, देन फैट, सिंपल शुगर, सभी टेस्ट में रिपीट भी करने वाली हूँ। यस, सबके साइंस के बुक में है एक्टिविटी। यस, ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपका साइंस का बुक ओपन करके देखो, इसमें सभी एक्सपेरिमेंट है। इवन जो संडे साइंस स्कूल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सबने ये एक्सपेरिमेंट किए भी हैं। ओके, उनको हम किट देते हैं। ओके, तो किट में सभी केमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। यस ना जितेशा, जितेशा आल्सो, अर्जुन, अर्जुन ने भी की है संडे साइंस स्कूल, सानवी ने भी किया है, उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। ओके, so is it okay my dear students? Yes, ma'am. Okay, Monday I will revise again, don't worry। आज आपको समझ में नहीं आया होगा तो मंडे में फिर से रिवाइज कर दूंगी, एंड इवन प्रैक्टिकली आल्सो आई शो ऑन मंडे, सभी टेस्ट में करके बताऊंगी मंडे को। ओके, बाय।